Hi, all the students. Welcome once again. The most common question, the most important question, and the very first question. Tell me something about yourself. अपने बारे में कुछ बताओ. And whichever interview you people face, let it be for the IIMs or the other top B schools of India, or even in a job interview, this becomes the very first question. Tell me something about yourself. And I generally see that students are not much confident about giving answer to this very first and the very basic question in an interview. And I see that students don't understand what points we need to include while giving the answer to this question, and moreover, how the answer has to be framed. But you people do understand this question is very important, and purely on the basis of the answer to this question, you people can actually define and decide the direction of the interview. तो स्टूडेंट्स हम इंटरव्यूअर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस आंसर वी पीपल एक्चुअली कैन गाइड द पैनल एज वेल and that is the reason it becomes important for us to do a lot of analysis about ourselves. We need to understand ourselves. We need to do a lot of research about ourselves before framing this answer. So in today's video, I'll be giving you a bit of insight about what points we need to include while giving our introduction. But in case if you people want to have a detailed analysis, we do have a dedicated online batch for PI as well. If you want me to give customized answers as per your profile for not only this question, but for almost all the common questions of an interview, for that I would urge all the students to become the part of our dedicated online batch. And believe me students, the learning which you people are going to have there, and the best part is all the classes are live classes. So you will get an opportunity to interact on a one-on-one basis with me, and I'll also take a lot of mock interviews as well. So you will have that opportunity as well. And students, mark my words, the learnings are not going to be limited only up to getting a job, getting admission into a college. But even students for the future job interviews as well, these classes are going to help you a lot. So it's a complete value for money program. And if you want to have more details about this, the number is given in the description box. You can contact us and we will share all the details. Now coming to this particular video, tell me something about yourself. Students do understand before I start discussing what points we need to include in this particular answer. Let us first try to understand what is the importance of this question and why this question is generally asked. Actually, it becomes an ice breaking. By this, the conversation begins. And moreover, students see, ये जो question है ना, इससे conversation तो start होता ही है, but आपके पास पूरा मौका होता है अपने बारे में जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं, you people can. This becomes one such open-ended question where students, you people can actually guide the panel. If you want कि पैनल आपसे हॉबीज के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो आप हॉबीज को हाईलाइट करो. अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स पैनल आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो यू पीपल कैन एक्चुअली हाईलाइट वर्क एक्स ऑल्सो. नाउ दैट लर्निंग and that smartness, how we people can do this, how we need to frame the answer so that we become more convincing in giving the answer, उसका थोड़ा सा insight अब इस वीडियो में you people are going to get. Now students, coming on the very first thing, what the points we need to include while giving an introduction. Now students, these are the most common 6 or 7 areas which we people should include while giving the answers. But that does not mean that it is compulsory for each and every student to talk about. Students, you people will have to customize. You will have to see on which areas you actually want to speak and which areas you want to skip. Now, for example, when I talk about hobbies, in case if you have got some very good hobbies, you can actually highlight them. But in case हमारे पास ऐसी कोई बहुत अच्छी hobbies है ही नहीं, and India में मैं generally देखता हूँ students having 2 common hobbies. One is listening to music and the second is watching cricket or playing cricket. So do understand, अगर मेरे पास कुछ बहुत यूनिक बताने के लिए है ही नहीं, तो उस केस में आप हॉबीज का डिस्कशन स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा. तो आई मस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट्स, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन अस, हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है. बट एनीवे, मैं इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करूंगा एंड आई विल ट्राई टू टेल यू पीपल हाउ यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉट्स को कनेक्ट करना. आई जनरली सी स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर्स इन अ वेरी लीनियर वे. जैसे आपसे पूछा गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. Now, for example, if a student replies in this manner, my name is Anil Choudhary, I have just completed my BCom from a place in Rajasthan. Then if I talk about my strengths are 1, 2, 3, 4, my hobbies are 1, 2, and my goals are this, and I have this achievement. Now see students, if you give the answer in this manner, it becomes a very linear way of giving the answer.
It is not much convincing, and moreover, I believe that 90% of the students tend to give the answer in this way only. So possibly if that panel has been taking lots of interviews on that one day, this particular answer of yours, which is a cliche, which is a very stereotyped answer, will not actually create interest or curiosity in the minds of the panel. So it becomes important, becomes very important for us. Instead of giving a linear answer, we should always connect the dots among all these points so that our answer becomes more interesting and convincing. One more thing you people should keep in mind. कई बार हमने देखा है students they keep coming to us and they say कि sir the panel asked tell me something about yourself. और जब हमने आंसर देना स्टार्ट किया तो पैनल ने बीच में ही रोक दिया, प्लीज कट शॉर्ट द आंसर. अब ऐसे केस में आई जनरली सी स्टूडेंट्स बिकमिंग embarrassed and they lose the complete tempo and confidence in the interview. And students, to avoid this, my one piece of advice is you people should always be ready with two introductions. One, which is an elaborate one, where you can actually cover each and everything. So you need to see how much interest the panel is taking and how much patient the panel is. तो अगर स्टूडेंट्स पैनल बहुत पेशेंस के साथ सुन रहा है तो उस केस में आप बहुत लेंदी और डिटेल्ड आंसर दे सकते हैं. बट इफ द पैनल डज नॉट एक्सिबिट दैट अमाउंट ऑफ पेशेंस, कीप एंड गिव अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन, बट इंश्योर दैट कि आपके जो की एरियाज हैं वो प्रॉपरली हाईलाइट ज़रूर हो जाए. तो सारे स्टूडेंट्स हमें दो इंट्रोडक्शन बना के चलना है, एक पूरा लेंदी इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. ओके, एक और छोटा सा पॉइंट यू पीपल शुड कीप इन माइंड व्हाइल गिविंग आंसर टू दिस क्वेश्चन. And that point is, see what happens is while giving an introduction, we people have to see that panel actually comes on those areas on which I want to have the discussion. Now that is possible only when you create some amount of curiosity in the minds of the panel. So that is the reason. Don't discuss each and everything in the introduction itself. You can actually leave some loose ends, and those loose ends should actually create a bit of anxiety, a bit of curiosity among the panel. And the panel should feel like asking more questions on that area. And this is how you people can actually guide the panel to the direction in which you want to have the discussion. Now see students, when I talk about what points we need to include, the very first thing is family background. And students, when I talk about family background, बहुत डिटेल से यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है. आप इतना सा बता सकते हैं कि you belong to a business oriented family, you belong to a service family. You may talk about both the parents are working, you can highlight that also. And moreover, if father is a businessman and mother is a housewife, आप चाहें तो इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स अगर फादर के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इंसाइट देना चाहें तो यू पीपल कैन गिव तो द पैनल में एक्चुअली आस्क मोर क्वेश्चंस ऑन दैट. एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि सर फादर के बिजनेस पर अगर क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊंगा, मुझे पता है व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, मुझे पता है व्हाट इज द टर्नओवर, एंड मुझे पता है व्हाट माय फादर डज, तो डेफिनेटली you people should give a bit of idea about your father's business as well. And at the same time, students try to understand जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू पीपल कैन रिलेट अ लॉट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली ऐसी है जहाँ पर बोथ द पेरेंट्स वर वर्किंग, तो यू कैन से दैट एज माई बोथ द पेरेंट्स वर वर्किंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज आई बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट. I started arranging all my things on my own. मेरा होमवर्क कंप्लीट करना, मेरे कामों को अरेंज करना, तो ये मैनेजमेंट के जो इनिशियल लेसन्स हैं बहुत अर्ली एज से आई कुड लर्न बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वर वर्किंग. इफ यू बिलोंग टू अ सर्विस फैमिली, यू पीपल कैन एक्चुअली टॉक अबाउट सर आई बिलोंग टू अ सर्विस फैमिली, both of my teachers, both of my parents are actually government teachers, and my parents have always taught me time management skills. My parents have always taught me if you respect time, time will respect you. So try to understand what I'm trying to do. I'm trying to connect my strength with the kind of family I belong to. And students, if we further analyze our family background, a few other things can also be highlighted. Especially if you have been born and brought up in a joint family, you should never miss saying this. You can say that, sir, as I have born and brought up in a joint family, I have experienced the joy of living together, the joy of sharing together. And my family has always taught me how to value relationship. Believe me, students, when we go for management, these are the qualities which actually matter there also. So what I mean to say is, even in case of a joint family, even in case of a family background, there can be a lot of things which we people can highlight. So depending on how much time do we have and what things
we need to focus upon. You people can frame the answer. Now coming on the academic background and the performances. Here students, it all depends. If you have always been a very good academic scorer, you can highlight it. But in case if you have always been average, you can skip it. In such a condition, you may just talk about the domain in which you have completed your graduation. And moreover, आपने commerce, BTech, आप किसके student हो? And moreover, students, what you people can do is you can relate the domain and whatever subjects you have studied with your career goals. तो यहाँ पर इतना सा काम अपन कर सकते हैं और यहाँ पर भी अपन अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत इफेक्टिव। एंड इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एकेडमिक स्कोर्स बहुत अच्छे थे या नहीं थे। इंटरव्यू में स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाउ वी पीपल कैन हैंडल सच सिचुएशंस, डिटेल क्लासेस में तो एनीवे वी पीपल कीप कवरिंग। चलिए स्टूडेंट्स, तो यू पीपल कैन इंक्लूड एकेडमिक बैकग्राउंड ऑल्सो एंड डू अंडरस्टैंड। कई बार बच्चे अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नेम्स लेते हैं। यू पीपल कैन टेक द नेम्स ऑफ योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओनली व्हेन वो रिनाउंड है एंड यू पीपल कैन प्रिज्यूम दैट इवन द पैनल नोज दैट। बाकी अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज है तो उसका नेम लेना, आई थिंक स्टूडेंट्स वी पीपल शुड अवॉइड इट, दैट इज नॉट नीडेड। ओके, नाउ कमिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड पर्सनालिटी। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने अभी जस्ट बताया how you people can relate your strengths with the academic background, with the family background, and moreover, besides this, अगर आप कुछ और strengths को highlight करना चाहते हैं, you people can do this. If you want to say, sir, I'm hardworking, you can say, but try to understand, there has to be a testimony also. You can actually relate, sir, I have always been a very good academic scorer, and that becomes the testimony of my hardworking. तो इस तरह से आंसर थोड़ा सा कन्विंसिंग हो जाता है। If you say that you are creative, definitely the panel may ask a question. Can you give an example where you have exhibited your creativity? Or how did you come to know that you are creative? When you say that, sir, team spirit is my strength, again the question may come, how did you come to know that? Okay, so do understand, ऐसा नहीं होता है कि whatever strengths you talk about, the panel will accept it on the face value. The panel will be ready with a lot of other counter questions also. इसीलिए क्या स्ट्रेंथ बताना क्या नहीं बताना, वी पीपल हैव टू बी केयरफुल इन दैट। कुछ और अच्छी स्ट्रेंथ्स हम लोग बता सकते हैं, जैसे मल्टीटास्किंग होना, ओके, जैसे प्रोएक्टिव होना, ओके, जैसे एक्सेप्टिंग डिफीट। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन यू कैन रिलेट विद दैट ऑल्सो। एंड कई बार स्टूडेंट्स आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी हॉबीज से भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी हॉबीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर, आपकी हॉबीज़ हैं पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, तो उससे भी रिलेट करते हुए हम अपनी स्ट्रेंथ्स को बता सकते हैं। प्लस अगर आपको कभी मौका मिला है हॉस्टल में रहने का, तो हॉस्टल लाइफ में क्या सीखने को मिला, तो वहाँ से भी अपनी स्ट्रेंथ्स को अपन रिलेट कर सकते हैं। तो इन दिस मैनर, या फिर कुछ इंटर्नशिप्स करने का मौका मिला, यू कैन टॉक अबाउट दैट। एंड जिन बच्चों के पास जॉब एक्सपीरियंस है, यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दैट। यू कैन से द 2 years of job experience in a company, what kind of strengths, what kind of qualities it was able to develop in you. तो इस तरह से स्टूडेंट्स पीपल कैन कनेक्ट द डॉट्स। ओके, चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एरियाज। मैंने थोड़ा बहुत इंसाइट दे दिया था, तो यू पीपल विल हैव टू थिंक कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना है, अंडरस्टैंड। ओके, बट अननेसेसरीली कुछ भी बहुत जेनेरिक हॉबीज को वहाँ पर कोड करना एंड कुछ भी कह देना। जैसे हम कई बार स्टूडेंट्स को देखते हैं, जैसे कि सर बुक रीडिंग इज माई हॉबी, एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स, चलो 3-4 ऐसी बुक्स के नेम्स लो जो तुमने पढ़ी हो। फिर बच्चा कहता है सर मैंने तो अभी जस्ट एक किताब पढ़ी और अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो इट इज़ अ वेरी न्यू हॉबी फॉर मी। बट एनीवे, अगर ऐसा कुछ है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। वही हॉबीज़ बताएं जो जनरली आपकी हॉबीज़ हैं एंड यू पीपल सीरियसली परसू। ओके, एंड इफ द क्वेश्चन कम्स यू आर एबल टू हैंडल देम। अचीवमेंट स्टूडेंट्स, कुछ मेजर अच्छे अचीवमेंट्स हैं तो आप लोग ज़रूर हाईलाइट करें। ऐसे अचीवमेंट्स जो बहुत चाइल्डहुड टाइम के हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th standard, you people should skip talking that. But 9th, 10th, 11th, 12th, या college, during these periods, these classes, these years, if you people have got some major achievements, curricular, co-curricular, extracurricular, तो इसे ज़रूर highlight करना चाहिए. At the same time, you should be ready to justify with your certificates, and if the questions come, so definitely students वो handle करना भी आना चाहिए। और achievements के बारे में if you have got something, ज़रूर बताओ। और जिन बच्चों के पास ऐसे कुछ बड़े अचीवमेंट्स नहीं हैं, यू पीपल कैन एक्चुअली स्किप इट, आगे बढ़ के बताने की ज़रूरत है ही नहीं। एक और छोटा सा पॉइंट सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ्स हियर, डू अंडरस्टैंड, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, दे टॉक अबाउट द वीकनेसेस ऑल्सो।
in the introduction itself. I would say that आप चाहें तो weaknesses को introduction में skip कर सकते हैं. If the panel wants to know more, let them ask another question. And weaknesses को कैसे handle करना है, definitely students आने वाले videos में कुछ insights मैं उसके बारे में भी ज़रूर दूंगा. But weaknesses को आगे बढ़ के you people may not share in the introduction. And then coming on goals, अगर goals को मैं बहुत clear cut specified नहीं भी बताऊं, तो भी students a bit of introduction can be given about the goals also. You can at least say that, sir, I see myself as a part of a top decision making team of a company, okay, where my contribution matters to the company. Sir, I see myself at a position where I have got a very good job profile, okay, growth prospects and financial stability. So in this manner, you people can actually talk about a bit of your goals as well. You can see that, sir, my goal is to excel in the field of management. Okay, you can talk about, sir, I want to enter the field of entrepreneurship. After completing my management education, I have got some business ideas and I would like to explore possibilities of becoming an entrepreneur. तो इस तरह से अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली, बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, लूज एंड्स अगर आप छोड़ोगे तो इट इज ऑलवेज बेटर. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर आप बोलना चाहते हो तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आइडियाज यू हैव ऑलरेडी गॉट, आपके उस बारे में थोड़ा बहुत पहले से तैयार हो जाओ. When the panel says, have you got any business idea? And then if you say, नहीं सर अभी तो सोचा ही नहीं है, अभी तो MBA करेंगे उसके बाद देखेंगे, I think ऐसा immature आंसर नहीं होना चाहिए. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो पहले से बता दो, यस सर ऐसे 2-3 बिजनेस आइडियाज दिमाग में हैं, तो once I complete my MBA, after that I'll explore the possibilities and the viability. Okay, in this way students try to understand. कॉन्फिडेंस भी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, एंड अ बिट ऑफ मैच्योरिटी इज नीडेड. तो जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलता है तब जाकर हम किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हैं. एंड इसके अलावा एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट्स आप लोग शेयर करना चाहते हैं, यू पीपल कैन. बट क्या शेयर करें क्या नहीं शेयर करें इसको लेकर, इफ़ यू वांट मी कि मैं हर चीज़ पर अपने इनसाइट्स दूं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर दें. एंड वापस से कहता हूं, जिन बच्चों को डिटेल्ड तैयारी करनी है, बिकम द पार्ट ऑफ द ऑनलाइन बैच. ओके, so the number is there in the description box. You people can actually contact us and become the part. On a daily basis, the live classes are going on over Zoom. So thank you very much for listening to this video, for watching this video, and whatever content I have shared, मुझे लगता है बहुत अच्छे insights मिले होंगे. And on the basis of this, आप जो भी आंसर फ्रेम करें, if you want कि मैं ये आंसर शेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो. एटलीस्ट मैं उन्हें पढ़कर थोड़ा बहुत इंसाइट या फीडबैक देने की कोशिश करूंगा. तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून. बाय बाय.